Good evening, everyone. Hello. Good evening, sir. Good Good evening. evening, sir. Good evening, sir. Am I audible? Good evening, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Namaste, Yes. sir. Namaste. Good evening, sir. Very good evening. Yes, sir, you are audible. Good evening, sir. Very good evening. So, if you find any difficulty in the voice, please let me know. So, we are discussing the Dr. Boll electroacupuncture system. Yesterday, we were discussing about the CMP point. CMP point. So, like we discussed, the CMP points are the point having power to restore all the functions of the meridian. हमारे पूरे मेरिडियन के फंक्शंस को रिस्टोर करने की ताकत रखते हैं सीएमपी पॉइंट. सो वी ऑल्सो डिस्कस द लोकेशन ऑफ सीएमपी पॉइंट. हमने ये भी देखा कि हमारे सीएमपी पॉइंट कहाँ होते हैं. दे आर लोकेटेड एट द मिडिल जॉइंट एंड if you want to restore any organ, if you want to restore any part or any meridian, we can use the CMP point, right? Suppose the person is suffering with a cardiac problem. The person is having irregular heartbeat or the palpitation. अगर व्यक्ति को irregular heartbeat या palpitation है, so we can use the CMP point of the heart and we can help normalize the rhythm of the heart. हम heart की rhythm को normalize कर सकते हैं with the help of CMP point. So what are the other problem happening in the heart? हार्ट में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? हार्ट की कई बीमारियां, द लिस्ट ऑफ द डिसीजेस वी कैन थिंक अबाउट, जैसे कि हार्ट की बीट का बढ़ जाना, हार्ट की बीट का कम हो जाना, कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो पतली पतली आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाना. ओके, दैट इज कॉल्ड CAD or the coronary artery disease. In these all conditions, or even the heart attack, someone is having chest pain, someone is having angina. Okay, इन सारी conditions में अगर कोई बोले कि मेरे हार्ट में ब्लॉकेज है, the person is having blockage in the heart, in these all condition we can think for CMP point of the heart. Like if we look at the CMP point of the heart here, अगर हम हार्ट के CMP point को देखें, so look at here. So this is the CMP point of the heart. We can see in this image. So this is the middle joint, neutral joint of the pitta joint. Below that, if we go down, that is the location of CMP point of the heart. Okay, it's written heart 8C. That is the CMP point of the heart. So we'll put the point here. हम इस point को लगाएंगे कहाँ पर? हमारे heart meridian में. So this is the heart meridian. Like yesterday we have discussed, the ball meridian is passing from the side. So from this middle joint, we will just move down and we can put the needle, we can put the magnets. हम needle या magnet का प्रयोग कर सकते हैं, right? So this is the point number, the CMP point of the heart. So bradycardia, tachycardia, irregular heartbeat, heart attack, blockage in the heart. There are multiple problems in the heart. तो आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि इस पर रोज एक मेथी का दाना लगाओ. Put the methi seed on this point regularly. So what it will do, restoring. ये if something happening
wrong with the heart, it will restore the functions of the heart. Okay, I will show you the location once again. So if you look at my finger here, so this is the middle joint. ये हमारे small finger का middle joint है. So just if this is the middle joint, so just below the middle joint, this is the location of this point. ये हमारे middle joint के ठीक नीचे इस point की location है. एक मिनट देखिए, इस उंगली में देखिएगा, सर नजर नहीं आ रहा. अभी आ रहा है. हाँ यस, अब आया. ये middle joint है, just below the middle joint, this is the point. So I will put one small needle and you can see I am putting the sujog needle here. Now if it's visible, can you see this? Yes sir. So this is the CMP point of the heart. Okay, it's a painless, pain like nothing, कोई पेन भी नहीं है इसमें. और आप चाहें तो इसे एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, मेथी सीड और स्टार मैग्नेट यू कैन पुट, एंड इफ द पर्सन इज हैविंग एक्यूट पेन यू कैन sedate this point, and even I will tell you the star magnet is very much effective. So this is for restoring function of the heart. Person is having high blood pressure, you can use it. Person is having rheumatic heart disease, person is having multiple from the heart, the number of the disease having like बीटल हाइपरट्रॉफी ऑफ द मायोकार्डियम. जब पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट लेकर आता है तो उसमें लिखा रहता है LBH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. वी कैन पुट दिस पॉइंट एवरी डे. So just think very simply, whatever the problem of the heart, all together we can tell cardiomyopathy, any problem of the heart, increase heartbeat, decrease heartbeat, the thick wall of the heart, any problem of the valve in the heart, like in the heart, we are having mitral valve, tricuspid valve, there are multiple valve in the heart. So we can use this point, heart, CMP point of the heart, right, which is just below the middle joint, neutral joint or the pitta joint. Okay. It's clear? Clear to everyone? Okay. Sir, even diastolic dysfunction, sir? You're asking diaphragm? Diastolic dysfunction. Yeah, yeah, definitely. Because what is the diastolic dysfunctions? Because when we talk about the blood pressure, like 120 by 80 millimeter of mercury. So the upper BP is 120 is systolic. The lower BP 80 is the diastolic. What is the meaning of diastolic? Diastolic means elasticity of the heart. Suppose I am pulling it. It is going back immediately. This is called elasticity. If we are young, elasticity is very good. We pull, it will go back quickly. That is called elasticity. But with the age, when collagen is decreasing, when body becoming weak, elasticity get decrease. जब हमारी उम्र बढ़ती है तो elasticity कम होने लगती है, तो हार्ट की elasticity भी कम होने लगती है. तो heart is expanding but not coming back in the same elasticity. That is the diastolic dysfunction. Diastolic dysfunction means there is a problem of the elasticity of the heart. So definitely we have to work on the heart only. हमें heart पर ही work करना. For cholesterol also we can use? Yeah, we can work on cholesterol, but for cholesterol we also will work on fat degeneration meridian. But because if the cholesterol is around the heart, suppose cholesterol in the coronary artery, cholesterol is doing blockage, एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं ट्रिपल वेसल डिसीज. ट्रिपल वेसल डिसीज क्योंकि 3 वेसल होती हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं. तो चेक किया, एक में 95% ब्लॉकेज, एक में 90% ब्लॉकेज, एक में 100% ब्लॉकेज. अब व्यक्ति को चेस्ट पेन हो रहा है क्योंकि तीनों जो आर्टरी हार्ट को सप्लाई करती हैं, तीनों ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं कर पा रही हैं, हार्ट को ठीक से ब्लड नहीं दे पा रही. क्योंकि हार्ट संपूर्ण शरीर को ब्लड दे रहा है, लेकिन हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए.
Heart is pumping the blood continuously throughout the body, in the each and every part of the body. But heart also need the blood. Heart also need the food. So the triple vessel disease means heart is not getting enough blood due to the blockage inside the arteries. So we are telling triple vessel disease. Okay. So because we want to break the blockage, so definitely we'll work on the heart for sure. But we'll work on other meridian also. We will understand that concept where we'll work. For artery, where we have to work, we will, but definitely on the heart also will work. Okay. So the one point will be CMP point of the heart. Clear? सर इस केस में एक इमरजेंसी Thank you, sir. पॉइंट कुछ दे सकते हैं जब तीनों आर्टिस्ट ब्लॉकेज है तो ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं, पॉइंट इसमें इमरजेंसी नहीं होती। आई विल टेल यू व्हाई। हम जितने भी लोग हैं सबको चेक कर लो, सबका कुछ ना कुछ ओके blockage होगा। Each and every person is having blockage. Like someone is having Okay. 70%, 60%, 50%, 40%, 65%. Okay, everyone is having blockage in the heart. But when it is reaching more than 90%, 95%, then person is getting symptoms. Otherwise, they're not getting any symptoms, right? So right now, so what I have to tell you, it's not the emergency. Emergency happened only when there is a more than 90 or 95% blockages, right? Then emergency happen. So when we do cardio, when we do lots of exercises, then and when we control over the diet, and when we do treatment, then we can work on this. तो हम ब्लॉकेज को निकाल सकते हैं। ओके, तो हम ब्लॉकेज पर वर्क कर सकते हैं, राइट? So in this way, the CMP part of the heart is very much important. I will tell you, nowadays, everyone should stimulate the heart CMP point because more or less everyone is having some strain on the heart. Okay, when we are getting emotionally disturbed, it is also affecting our heart. So definitely we should stimulate our CMP part of the heart sometime, for sure. Agree? Agree with this or not? Sir, when the muscles in the heart is expanded also, we can use this point? Yeah, that's why I told you the expansion of the muscle of the heart, expansion and the contraction, expansion and the contraction. So if the good expansion is happening, then your BP is good. But if the good expansion is not happening, it means your diastolic BP will be high. So definitely we have to work. For any problem of the heart, whatever the problem of the heart, we have to use the CMP point of the heart. What is the meaning of CMP point? We are restoring the functions of the heart. हम हार्ट के फंक्शंस को वापस रीस्टोर कर रहे हैं। जैसे कि आपने just like you're telling, okay, I want to learn acupuncture, I learned earlier but I forgot, now I want to, okay, then I will tell, okay, now start from zero, okay, learn ABCD of the acupuncture, then learn little intermediate, then go to the advanced. So that is called restore. Restore means I will start from zero. That is called restore. Okay. So CMP point means whatever the problem is there, but as soon as we put the CMP point, again we are restoring all the functions of that organ or the part of the meridian. Got it? सर हाई बीपी में यूज कर सकते हैं पॉइंट? Yeah. हाई बीपी में यूज कर सकते हैं, डायस्टोलिक ज्यादा आता है। Yeah, definitely we will do, but we will add one few more point. Like suppose shortly I am coming to the pericardium. So if there is please any problem, leave our questions at least in the end, so you can able to continue the classes continuously. if there is any problem happening with the arteries or any problem is happening with the circulation, we have to add some more part also, right? Also, you can do one thing, you can write in the questions and after that we will discuss. Otherwise, there are lots of things we'll not able to discuss. If you have a very important question, you immediately ask. But if it is possible to ask in the last, so after that we will discuss, okay? Okay, fine. Okay, thank you, sir. Yeah. So now let's move ahead and so I told you, you want to restore the functions of the organ.
then we'll work on the CMP point of the heart. Like example here, irregular heartbeat, palpitation, we are using CMP point of the heart. Okay, हम जब हार्ट की कोई भी तकलीफ होती है तो हम हार्ट के CMP पॉइंट का प्रयोग करते हैं. In the same way, what are the problem of the liver organ or the liver meridian? Liver की क्या problems होती हैं? So we can see there is a fatty liver, there is a liver enlargement. Okay. So if there is any problem of the liver and we want to work on the liver, so we will use the CMP point of liver. Now, when I am telling you about the liver, so there are many problems, like someone is drinking the alcohol and getting the fatty liver. Many persons are not drinking the alcohol, they also get fatty liver due to some other reason. ओके, तो उसके अलग अलग नाम हैं, जैसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, अल्कोहलिक फैटी लिवर. बट द फैटी लिवर इज देयर ड्यू टू एनी रीजन, वी विल वर्क ऑन द CMP पॉइंट ऑफ द लिवर. नाउ अनदर डिसीज वी नो दैट इज हेपेटाइटिस. हम जानते हैं कि हेपेटाइटिस नाम की बीमारी होती है. हेपेटाइटिस A, B, C, D, देयर आर मेनी वेरिएशन ऑफ द हेपेटाइटिस. So we will use, because the liver is there, so we will use the CMP point of liver. अगर किसी भी प्रकार की हेपेटाइटिस है, हम उसमें CMP point को जरूर ऐड करेंगे. Now not only this liver cirrhosis, even the liver cancer. If the person is suffering with the cancer, we will also add other point of organ degeneration meridian. लेकिन हम लिवर की प्रॉब्लम है तो लिवर का पॉइंट तो लगाएंगे ही. If the person is suffering with a liver problem like liver failure, liver cancer, or any problem of the liver, we will work on the liver meridian. अब हमारी जब कोई व्यक्ति टॉक्सिन का सेवन करता है तो उसकी मृत्यु लिवर या किडनी फेलर से होती है. ओके, द पर्सन इज टेकिंग टॉक्सिन्स, देन person dying due to the liver failure or the kidney failure. But the quantity of the toxin is very less, then will not die. अगर उसके जैसे हम टॉक्सिन रोज लेते हैं, कैसे लेते हैं हम? We are taking the toxin in the form of pesticides. We are taking the toxin in the form of lots of preservatives. We are drinking every day microplastic. हम जो प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं ना, जिसे हम कहते हैं मिनरल वाटर, तो हम हर रोज खूब सारी प्लास्टिक पीते हैं. इवन कहते हैं ना, दिस इज द वेरी गुड बोतल, द बोतल ऑफ टपर बियर. Even we are having lots of microplastic there. So that plastic we can never digest and it will damage our liver. So when we are taking the small quantity of the poison in the form of, like I told you, then it is also affecting our liver badly. But because the quantity is less, so we are not dying, but it's affecting our health. ये हमारी health को affect करती है. Then we are getting the multiple type of the liver problems, like I told you, fatty liver, cirrhosis of the liver, and even it's reflecting in our emotions like anger, irritability, frustration. We want to work on the liver health. We have to treat the CMP point of the liver. As soon as we work on the CMP point of the liver, we will able to restore the functions of the liver slowly. हम धीरे धीरे लिवर के फंक्शंस को रीस्टोर कर सकते हैं. आई विल शो यू द लोकेशन ऑफ CMP पॉइंट. तो आपके सामने कोई पेशेंट आए, आप आज ही एक ही मैग्नेट लगा देना. अगर आपके सामने कोई लिवर का पेशेंट आता है, आप एक स्टार मैग्नेट लेना, पेपर टैप में चिपकाना और उसके CMP पॉइंट पर लगा देना. उसको बोलना कि आप इस मैग्नेट को रोज 2 या 4 घंटे के लिए लगाओ, और मैग्नेट ना हो तो मेथी का दाना लगाओ. सो you can tell everyone if having any type of the liver problems, even the person is having anger, frustration, irritability, suppressed emotions, as per the acupuncture, we are considering that this is the problem of liver. So what we have to do? We have to use the CMP point of liver. I will show you the location of this point. Liver autoimmune also?
Yeah, definitely. Yes, yes, yes. Whatever the problem. Actually, that's why this system is very simple. We are treating the liver entirely. So now we can see in this image, if we see this in this image, so this is the middle joint, okay, and we know on the outer side there is a spleen meridian, on the inner side there is a liver meridian, okay. So just above the middle joint, we are having CMP point of the liver, and we have to treat this point. Excellent point for restoring the functions of the liver, fatty liver, hepatitis, liver cirrhosis, liver cancer, और females को जो PMS की प्रॉब्लम होती है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, the big cause is liver, the migraine headache, big cause is liver. So in the PMS, premenstrual syndrome, जो menstruation के पहले तकलीफें होती हैं, दर्द होना या फिर माइग्रेन हेडेक, इन सब में भी हम CMP पॉइंट ऑफ द लिवर का यूज कर सकते हैं. इट्स वेरी इफेक्टिव. आई विल शो यू. लेट्स सी दिस. सर कब शुरू किया? क्या बोल रहे हैं जी? मैं कितना मिस हो गया, मैंने अभी ज्वाइन किया ना, कब शुरू किया? बस 5-7 मिनट हुए हैं. जी Sir, once again, please show the नहीं points, नहीं, sir. 15 मिनट हो गए. 15 मिनट. ओके. Okay, so let's see here. If you look at here, if you look at my feet, can you see my feet? क्या आपको मेरा पैर दिख रहा है? Yes, sir. sir. Yes, yes. तो लिवर मेरिडियन इधर होगा, इधर होगा, Spleen, इधर होगा क्या? liver, Liver. Inner side. Some outside, sir. Yeah, outside is the spleen meridian, Yes. inner side is the liver meridian, right? Yes. Yes, sir. What we'll do, we will go to the inner side, and this is the middle joint. We can see very clearly, this is the middle joint, right? Yes. So we go Yes, sir. here to the middle joint. On the side, there is the CMP point of the liver. We can see here. Can you see this? yes, sir. Sir. Yeah. Anyone who can't see, please let me know. Black and white border, sir. Yes, Sir, black, yin yang border, yin yang border, yes, on the side. We can see this. Got it? So what we'll do, this is the CMP point of the liver, and we will put the magnet here, we will put the needle here. It's a very effective. Only if I have Sir, said, sir. perpendicular or which direction? Direction is, there is no direction. There is no question in direction in this. Prediction or tonification. Yeah, so here, if you want to, because we know liver, if you really want to work on the direction, then you know how the liver meridian is going. You know now? Yes. Liver 1, liver 2, liver 3, how the meridian is going. So we can put in the opposite direction if you want to set it. Okay. Okay. I will tell you one thing. One patient came, called me. Then what I told, because he was having very aggressive behavior. Very aggressive behavior. What I told, okay, do one thing. मैंने उसको क्या बोला? Because I thought कि he is having lots of anger. How to work on the anger? मैंने उसको बोला कि एक पीले रंग का धागा लो. किस रंग का? Yellow. Told him, take yellow or the brown color thread, either yellow or the brown color thread, and just tie around this joint. Can you tell me why I told like that? Anyone? Humidity tonification When it and is dryness tonification. When seeded क्या sir? When to seeded? liver when it is studied. Yes, you know that. You know the concept. It's a very, very effective concept, and this worked very nicely. मैंने उसको ये बोला, इसने अच्छा काम किया. So I will tell you what I told him. So let's see here. So if this is the great toe, right? And our meridian is passing from here. This is the liver meridian.
सर ये पॉइंट क्या सीधे पैर में होगा क्या लेफ्ट में भी हो सकता है? दोनों में होगा जी, दोनों दोनों में? दोनों पैर में होगा. ओके ओके. So what do we do? Because point is above the joint here. This is the point. Above the joint. That is the CMP point of liver. Remember one thing. In the legs, all the CMP point above the middle joint, distal to middle joint. Distal to middle joint. जितने भी CMP point हैं, distal joint के मतलब मिडिल जॉइंट के डिस्टल है, दूर है, यानी बाहर की ओर है. अब इफ वी put the brown color thread here, suppose I am putting the brown color thread, or we are putting the yellow color thread, what will happen? As per the 5-element cycle, the liver is the wood element. Liver क्या है हमारा? Wood element. Humidity. Yeah. Then we know after the wood there is a fire. After the fire there is a earth element. After the earth element there is a metal element. After the metal element there is a water element. So always remember, grandmother and grandson, grandmother or grandson, they are opposite. They are always opposite. If we bring the energy of the grandmother or if we bring the energy of the grandson, we can do the control here. हम कंट्रोल ला सकते हैं. तो हमने जब लिवर को हमें कंट्रोल करना है, तो एज पर द 5-element cycle, if we want to control any meridian, invite the energy of either grandmother or the energy of grandson. Okay, both can control, दोनों ही कंट्रोल कर सकती है. ग्रैंडसन थोड़ा ज्यादा गति से कंट्रोल कर सकता है. ग्रैंडसन इज हैविंग मोर पावर टू कंट्रोल, but both is having power. Suppose someone is having too much anger, irritability, frustration, feeling of revenge, and liver is hyperactive or having some problem with the liver, and you want to control the liver because most of the time liver is hyperactive. So we can put the yellow color thread or we can put the brown color thread. But remember one thing, before doing anything, you have to do diagnosis. आपको पहले, ये बहुत आसान है, गुस्सा है दे दिया, ठीक है, ये डायग्नोसिस हो गई. इसको गुस्सा आता है तो हमने दे दिया. ये डायग्नोसिस करना है पहले, फिर देना. ऐसा नहीं कि हर किसी को बोल दिया ये, यानी आपके पास उसका कोई कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फिर कंसेप्ट उल्टा हो जाता है अगर आप बिना सोचे समझे देते हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? Yes, sir. सर ये क्या एडीएम भी काम करेगा? या सर ये बच्चों की हाइपर हो जाएगा क्या? यस, व्हाट यू आर टेलिंग? सर ये बच्चों की जो हाइपर एक्टिविटी बड़ी होती है उसमें काम करेगा? अरे गजब का. आई डू दिस. इफ द हाइपर एक्टिव किड्स, आई do definitely do this, because see, I am telling the parents, you do this, just put the, because I want to control the hyperactivity, so I am telling them, put the yellow color or the brown color thread there. Okay. सर हाइपर एक्टिविटी में चलेगा तो हाइपो में टोनिफाई करके चलेगा? हाँ, हाइपो है तो उसकी मदर का कलर लगा दो. जैसे अगर मान लो किसी को लिवर डेफिशिएंसी है, वीक लिवर है, ब्लड विजन है, आंखें कमजोर हो रही हैं, इफ द पर्सन इज हैविंग पुअर ब्लड, तो उसकी माँ का कलर लगा दो. लिवर की माँ कौन है? तो काला रंग लगा दो, काला रंग का धागा. काला या ग्रीन भी कर सकते हैं ना? हाँ, सेल भी कर सकते हो. सर एक बार कलर का डेमो दिखा दीजिए. कलर का डेमो दे दूं मैं? ठीक है, यस सर, यस सर. ठीक है, उसका अरेंज करना पड़ेगा. राइट, बाय विल डू डेफिनेटली. ओके.
Okay, so Sir, now, I have fibrosis of liver and pressure in the eyes I have. okay, so definitely if you are having high pressure in the eyes, so definitely we have to calm down the pressure of the eyes. So for calming down the pressure in the eyes, we have to sedate it. And for sedating it, you can work with a brown color because metal, like a degeneration, sedation, it will do very good. You can work with that, right? Okay. Okay. But right now, Can we you can put the star magnet on the liver, and because in the eye, for the eye, Dr. Bol is having very big treatment. बिल्कुल इस Yeah. तरह का treatment. Yes, So sir. Liver tree. For Sir, fibrosis, I can put that brown color, no? Red. yes, you can put it, brown. sir, if we cannot use thread, we can use color No, sketch pen. thread are also very good. One of my students are using thread like वो जो स्वेटर बनाते हैं ना ऊन हाँ हाँ उसका woolen thread use woolen. करती है. Yeah, woolen. And I am surprised with the results. She is sharing results every time with me. Okay. I'm surprised with the results. It's give very good results. So you can also try that, right? And it's not having any Sir, it means Sir, my this stomach lining below lining is becoming thin. stomach lining, Yeah, becoming thin. your abdomen, stomach. Down part. Okay, that is different. Okay, that is We can ask Okay. questions later, probably. Sir, just the query section can be in the end, sir, so that you can have a flow of the lesson. That's my humble So request. if I very told you intense first. query, related query, you ask immediately. Otherwise, keep it in the last. So we can we will Sir, able to can we say that this point is a weaned point of the liver? CMP point is weaned or heat point? No. CMP point is not the bind, right? It's a different concept. It's not the bind point. Okay. So it's not connected with phi element, right? No, it's not connected with 5 elements, right? It's not the bind. Okay, let's move ahead. चलिए आगे बढ़ते हैं. So now we can see in this image here. So we can see here the point of the liver. Now we can see this is the nail, and on the corner of nail, the liver meridian is starting. Then we can see this is the joint, above the joint, but little inside. On the yin yang junction, we have to put this point. That is the CMP point of the liver. Okay, let's move ahead. So now, in the same way, we are moving to the lung. So what are the problem of the lung and the lung meridian? If any problem is happening with the lung or the lung meridian, we are going to use CMP point of lung. हम lung के CMP point का use करेंगे. Yesterday we have discussed the CMP point of the lung. कल हमने CMP point of the lung देखा था. I will show you quickly the CMP point of the lung here. If you look at in this image, actually अगर हम TCM की बात करें तो लंग मेरिडियन हमारा बाहर होता है. ये सबको पता है ना कि लंग मेरिडियन बाहर की तरफ होता है. वी आर हैविंग लंग मेरिडियन आउटर साइड इन द TCM. But Dr. Bol has kept this lung meridian inside. डॉक्टर बोल रहे हैं लंग मेरिडियन यहां से उठाया और यहां अंदर डाल दिया. So Dr. Bol has taken the lung meridian from outside and put in the inside. और इस मेरिडियन को इन्होंने नाम दे दिया lymph meridian. This is a very big change. And because Dr. Bol was checking each and every point with a dermatome, so he has done very intensive research. On the basis of research, he has told each and everything. Okay, this point will do this point will do this. डॉक्टर बोल ने कहा ये वाला हार्ट पॉइंट दबाओगे तो हार्ट के राइट साइड के वॉल्व यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व पर असर होगा. इधर का हार्ट रेट दबाओगे तो लेफ्ट साइड के माइट्रल वॉल्व पर असर होगा. इतनी इंटेंसिव और क्लियर रिसर्च की डॉक्टर बोल ने करके दी. इट्स वेरी क्लियर एंड इंटेंसिव रिसर्च. Heart rate on the right side is good for valve on the right side of the heart. That is tricuspid valve. The heart rate on the left side is very good for the valve
of the left side of the heart there is a bicuspid valve. तो जब रिपोर्ट लेके आता है ना पेशेंट, डॉक्टर साहब आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन द माइट्रल valve, डॉक्टर टोल्ड द आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन द valve एंड वी सी द रिपोर्ट mitral valve regurgitation. रिगर्जिटेशन का मतलब उल्टी, कि mitral valve उल्टी कर रहा है मतलब ब्लड का फ्लो उल्टा जा रहा है. ओके, लेफ्ट साइड heart rate here. So it's very clear and very effective. Just a single point will work efficiently if there is any problem of the wall of the heart. Okay, so I'm coming back to here. Dr. Bull has given the lung meridian inside. So all the CMP point, if we see, all the CMP point is distal to the joint. If this is the middle joint, so distal to the joint, all the CMP point, जितने भी CMP point है आगे की ओर है, यानी अंत की ओर है, अंत की ओर. But only 2-3 meridian like lymph meridian, lung meridian and the heart meridian is down. ये पीछे. तो अगर हम इस जॉइंट से नीचे आ गए, लिम्फ मेरिडियन सीएमपी पॉइंट, इस जॉइंट से नीचे आ गए, दैट इज द सीएमपी पॉइंट ऑफ द लंग मेरिडियन. सो वी आर कमिंग टू द सीएमपी पॉइंट ऑफ द लंग मेरिडियन हियर. आई विल शो यू इन द इमेज हियर. लेट्स सी नाउ. So we can see this is the middle joint and we can see the CMP part of the lung. The name is lung 10C. Lung 10C. Just below the middle joint. Okay. Now, if the person is suffering with any type of the problem with the lung like asthma, chronic asthma, okay, there is a breathlessness, सांस की तकलीफ होना, coughing, tightness of the chest, and if you see the report, in the report is written COPD, means chronic obstructive pulmonary disease. There are many problems like bronchitis, emphysema, pneumonia. Okay, and previously person was having tuberculosis and still we can see some scar in the lungs. पहले कभी टीबी हुई थी, अभी भी स्कार है, और lungs की कोई भी प्रॉब्लम है. Even the person is suffering with the cancer of the lung or any problem of the lung, we have to use the CMP particular. अगर व्यक्ति को frequently cough and cold होता है, तब भी हम इसी CMP point of the lung का प्रयोग करेंगे. Got it? So how we'll do? We will put the magnets, or we will go and we'll put the magnet or the needle here. So this is the CMP point. So before putting, we will go and we'll find out exactly where we feel the depression, where we find the depression, and we'll put the point. Do we have to look for the painful point there and then put it? Actually, all the time you will not find painful point, but अगर आपके पास वो जो मशीन है ना, जो हमारी इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर की मशीन आती है, do you have that machine? No, no. तो वो मशीन आ जाती है, वो मशीन 1500-1200 रुपए से स्टार्ट होती है. उसमें एक वो होता है, पॉइंटर होता है, एक चेक करने का होता है, वो भी मैं आपको शो दिखा दूंगा. With Jimmy you can't. Jimmy से भी हम कर सकते हैं. If you press with the Jimmy, then you will find painful. But with the hand, sometimes you don't find painful. With the Jimmy, you yeah. तो पॉइंटर में होता है, जब पॉइंटर को हम घुमाते हैं ना, तो वो ज्यादा आवाज करता है, ऐसी आवाज करता है. सर ये वाली मशीन है हमारे पास. कौन सी है? हाँ, ये भी है. ये तो ट्रीटमेंट के लिए है. हाँ, ये तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं इस पॉइंट से भी. हाँ, ये भी है. तो जब इस मशीन को हम ले जाते हैं, हमने कितने में खरीदी है मशीन? सर 3500. 3500, राइट? जी जी जी. Okay, good. 3500. Yeah, okay, this is a good machine. You can treat this. You can use it for the. So when we are using this machine, and this machine is also, वो आप क्या करिएगा, इसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिएगा. ये मेरे पास ग्रुप में डाल दीजिएगा. ये बहुत ही कॉमन मशीन है. There are many person using this machine, and you can also use this machine, right? So with the help of this, you can stimulate the point, or you can put the needle like this.
Let's see. Like this. It's a lung meridian, the CMP point of the lung. So For sadness also, depression, we can use this. yeah, so if any person is having any type of the lung problem, like we know lung are connected with the sadness or guilty feeling, melancholy, depression. If you want to work on the sadness, अगर आपको किसी भी तरह के इमोशन पर वर्क करना है तो आप इस पर वर्क कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू वर्क ऑन द इमोशन, नेवर फॉरगेट द हार्ट, क्योंकि कोई भी इमोशन है लेकिन फाइनली वो हार्ट को तो प्रभावित करता ही है. तो आप लंग का लगा दो. यू कैन यूज दिस पॉइंट इफ द पर्सन इज हैविंग प्रॉब्लम विद द इमोशंस, but after that you have to also put the point of the heart. For the skin problem, we have skin degeneration meridian. We will be discussing shortly, but because lungs also work on the skin, so if you want to treat the any type of the skin problem, you can work on the lung as well as you can work on the skin. So actually, when I am discussing the CMP point with you, please make sure if anyone is having any type of the problem, you just find out which meridian is affected. The person is having problem with the lungs, or the person is having some other problems, and you at least you start using the CMP point. Okay, clear? Can we proceed? Yes. Yes, sir. Now, so the people, many person are suffering with the different type of the blood disorders. Okay. So what are the problem of the spleen? And because there are lots of problem which is connected with the blood, with the RBC, WBC, platelets. So what are all the problems which we can treat with the help of CMP part of the spleen? अगर किसी को blood की कोई भी problem है, if the person is having any type of the problem with the blood chemistry, we can use the CMP part of the spleen, and Dr. Board has divided the spleen meridian in two parts. The right side spleen meridian, which is called pancreas meridian, and the left side spleen meridian, which is called spleen meridian. And the left side spleen meridian we will use for the blood chemistry, and the right side spleen meridian we will use for the pancreas. This will discuss after some time. Let's discuss this. अभी हम लेफ्ट साइड स्प्लीन मेरिडियन की बात करते हैं, राइट? अगर हम वेस्टर्न मेडिसिन की बात करें, if we talk about the western medicines, so spleen is very important organ. Okay, spleen एक बहुत ही important organ है. Sometime we know spleen is getting enlarged. कभी कभी spleen बड़ी हो जाती है. Like in many disease, like in malaria, or there are many disease, there is an enlargement of the spleen, which is called splenomegaly. Okay. Spleen का size बढ़ जाना. Okay. So there are many other disease, like even the liver disease. There are many disease, spleen getting enlarged. Okay. So we have to work on the CMP point of the spleen. If the person is having low hemoglobin, or there is a problem with the RBC, there is a problem with the WBC, there is a problem with the platelets, we have to use the CMP point of the spleen. हम ये तो हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है. हम जानते हैं कि किसी का हीमोग्लोबिन कम हो गया, ब्लड कम हो गया. एक पेशेंट का विटामिन B12 चेक किया आपने, तो विटामिन B12 कम आया, तो विटामिन B12 को भी हम स्प्लीन, हम उसे भी एक प्रकार का एनीमिया बोलते हैं. If the person is suffering with the deficiency of the vitamin B12, or because if there is any deficiency, any type of the deficiency happening in the blood by the vitamin B12 deficiency or other type of the vitamin B12 deficiency, तो हमें स्प्लीन को मजबूत करना होता है. तो we will work on the CMP point of the spleen, right? So the most important is enlargement of the spleen, and as per the TCM, spleen is responsible for formation of the vitamins, formation of the nutrient. Spleen
सब एक एक वृक्ष है, वृक्ष में जो बड़े बड़े फल लगते हैं ना वो स्प्लीन है। यानी जो एक खूब बड़ा वृक्ष है, एक बहुत बड़ा जैसे आम का वृक्ष है, उसमें बहुत बड़े बड़े जो मैंगो लगते हैं वो स्प्लीन है। स्प्लीन इज ए प्रॉस्पेरिटी। In the same way, if you talk about the human body, in the human body, we are having muscles, we are having good hemoglobin, we are having good energies. That is because of the spleen. So if the person is having any type of the deficiencies, then we want to uplift the energies. अगर हम energies को lift करना चाहते हैं तो हम spleen पर work करेंगे। और as per the TCM we know, स्प्लीन का तो बहुत बड़ा रोल है। इट इज लिफ्टिंग द एनर्जी अप। पता है ना कि स्प्लीन की डेफिशिएंसी होती है तो कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे वेरिकोज वेन। Prolapses. वेरिकोज वेन इज बिकॉज ऑफ द स्प्लीन एंड इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज। व्हाट विल डू, वी आर गोइंग टू यूज CMP पॉइंट ऑफ द स्प्लीन। सो स्प्लीन विल यूज फॉर एनी टाइप ऑफ द ब्लड डिसऑर्डर। अगर हमारे शरीर में जो RBC WBC प्लेटलेट होते हैं, आपने सुना है कि डेंगू हुआ, प्लेटलेट का काउंट कम हो गया, अब ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, बिकॉज आफ्टर डेंगू इट्स वेरी कॉमन द प्लेटलेट इज गेटिंग रिड्यूस। जो लोग ब्लड थिनर लेते हैं, ब्लड पतला करने की दवाइयां लेते हैं, उनका भी ब्लड पतला हो जाता है। ब्लड पतला होने का मतलब है उनका प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। सो if we want to work on the RBC, we want to work on the WBC, or we want to work on the platelet, we have to work on the spleen. If we talk about the WBC, WBC also play a very important role because WBC are the policemen of blood. अगर हमारे शरीर के WBC गड़बड़ हो जाए, WBC मतलब पुलिस डिपार्टमेंट, policemen of blood. So they are called white blood cells. If any pathogen want to attack on the human body, WBC are fighting. तो अगर हमारा स्प्लीन कमजोर हो जाए तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी। स्प्लीन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज विदाउट WBC इट्स इम्पॉसिबल टू फाइट विद द इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन से लड़ना संभव नहीं है। So that's why if we want to work on the RBC, want to work on the WBC, want to work on the platelet, we have to work on the spleen, and we are going to use the CMP point. Let's see the location. So look at in this image. If we are going in the left leg, अगर हम लेफ्ट लेग में जाएंगे तो स्प्लीन होगा, और अगर हम राइट लेग में जाएंगे तो पैंक्रियाज होगा। तो ये भले ही राइट लेग है, दिस इज द राइट लेग, बट यू हैव टू कंसीडर लेफ्ट लेग। सो फ्रॉम द मिडिल जॉइंट वी आर गोइंग अबव, दैट इज द पॉइंट स्प्लीन 1A, द CMP पॉइंट ऑफ द स्प्लीन। हमें इस पॉइंट को ट्रीट करना होगा। लेट्स सी नाउ, आई विल शो यू दिस पॉइंट लोकेशन। सर स्प्लीन और पेनक्रियास में तो CMP पॉइंट दो है ना, हाँ, एक SP 1A और 1B, तो दोनों यूज करेंगे। मैं बता रहा हूँ। अभी मैं पहले एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको, फिर मैं धीरे धीरे आपको। तो देखिए ये हमारा स्क्रीन मेरिडियन है, जिसका मिडिल जॉइंट, ये हमारा मिडिल जॉइंट है। जस्ट अबव द मिडिल जॉइंट देयर इज अ CMP पॉइंट ऑफ दिस। कैन यू सी दिस? क्या विजिबल है? Yes, sir. नहीं है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देयर इज अ CMP पॉइंट। Yeah. तो हम इस पर एकदम मिडिल जॉइंट के ऊपर ही है। तो अभी हम पहले मैं आपको एक एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिर हम उसमें एड ऑन करेंगे बात में। अभी मैं सबसे मुख्य पॉइंट की बात कर रहा हूँ। सर ये लिवर CMP पॉइंट के बाजू में नहीं आता? लिवर Opposite अंदर, side, स्प्लीन हाँ बाहर।
हाँ लिवर थोड़ा ऊपर दिखाइए आप. Liver CMP point is a little bit upside. No, liver is inner side, no? Inner side, but middle joint का ऊपर दिखाए थे आपको. हाँ, तो प्रश्न क्या आपका? व्हाट इज द क्वेश्चन? स्प्लीन का CMP point भी उसके बाजू में this side, the other side it will not come. एक मिनट, I will show you first image, then you tell me. Okay, one. No, sir. Actually, she is asking liver CMP and spleen that is CMP inside, both lies in Just same line. opposite. Yes. Just opposite to each other, she is asking, sir. Yes. Liver will be this side. Yeah, spleen will be that side. And spleen Same line पे नहीं आएगा. So same line. हाँ, ये मिडिल जॉइंट है ना, तो यहाँ पर लिवर आएगा और यहाँ पर स्प्लीन आएगा. हाँ, या. हमें ऐसे नहीं सोचना है सेम लाइन. हमें क्या करना है कि हमें डिप्रेशन ढूंढना है हड्डी में, वहां पर जाके ऐसे पालपेट करके जैसे बोन के एंड्स में जाके डिप्रेशन ढूंढना है. जस्ट जॉइंट के बाद ही आएगा और वहां पर हमें स्टिमुलेट कर देना. गॉट इट? Yeah, very next to the joint only. Just next to joint. Just next to joint. Okay. आप ये समझिए डॉक्टर, as per the concept of Dr. Bowl, where energy is moving. As per the Dr. Bowl, जब energy move करती है, when the energy is moving, because of the joint, it get obstruct and it create acupoint. जैसे मान लो एक रास्ते से कोई जा रहा है और वहां पर एक मोड़ आ गया, रुकावट आ गई, तो वहां पर थोड़ा एक्यूमुलेशन हो जाएगा एनर्जीज का, वही एक्यू पॉइंट है. व्हाट इज द एक्यू पॉइंट? बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स, बिकॉज द बोन, because bone is changing the shape, so that's why at the end of the bone there is a creation of the acute glands. Okay, so in this way we have discussed the spleen. Let's move ahead. Sir, if we apply the needle, how many times it should kept? Yeah, this will discuss we later on कि हम सर इन राइट साइड अभी हम कैन जैसे वी डायबिटीज का आपको एक प्रोटोकॉल बनाना Diabetes. सिखाएंगे, डायबिटीज का प्रोटोकॉल बनाना सिखाएंगे. देखो निडल का वही है, कल भी मैंने रिपीट किया था कि टाइम की जब हम बात करते हैं, देखो एवरीवन आस्क फ्यू क्वेश्चन, इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन. ड्यूरेशन ऑफ द निडल इन द टर्म ऑफ कितने मिनट लगाएं रोज? सो नॉट मोर देन 30 मिनट. Needle should be maximum 30 minutes, not more than 30 minutes. Then you ask how long we to so treat the patient. It depends on the condition. ये बिल्कुल फिक्स करना संभव नहीं है कि पेशेंट 10 दिन में ठीक हो जाएगा. ये भी हम डिस्कस करेंगे. हम आयुर्वेदा में कहते हैं 6 रोगों की 6 अवस्थाएं होती हैं. डॉक्टर बोल ने भी कहा कि रोगों की 6 अवस्थाएं होती हैं. देयर आर 6 फेजेस ऑफ द डिसीज. अगर आपने 5वीं अवस्था में पेशेंट आया और उसे ट्रीट किया तो समय लगेगा. पहली अवस्था में पेशेंट आया तो समय कम लगेगा. इट डिपेंड ऑन द पेशेंट व्हेन इज कमिंग टू यू, whether it's coming on the stage 1. So in the doctor bowl there is an explanation of the all stages. Okay, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage, that is called संचय, प्रकोप, pressure, स्थान संचय, व्यक्ति भेद. We will discuss that time we will discuss these things. It is coming out already. Next, move to the next. Now I am coming to the CMP point of the triple warmer. अब हम ट्रिपल वार्मर के CMP पॉइंट की बात करते हैं. The meaning of triple warmer is endocrine meridian. इसी को हम endocrine meridian कहते हैं. If the person is suffering with any type of the endocrine problems, be like the thyroid issue, like the ovarian issue, like the adrenal gland issues, or any other type of the endocrine problem. Like when we will discuss about the diabetes, जब हम diabetes का discussion करेंगे, तो definitely we will also put the point of the triple warmer meridian. Because
Diabetes is because of the pancreas, and pancreas is the endocrine gland. Now, suppose if you want to work on the thyroid, you have to work on the triple warmer meridian. So when we are putting the CMP point of the triple warmer, what we are doing, we are restoring the functions of all the endocrine glands. हमारे जितने भी endocrine glands हैं, उनके हम functions को restore कर पाते हैं. So we can see here in this image, हम देख सकते हैं. In the ring finger, this is the root of the triple warmer meridian. ये हमारे ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का रूट है. एंड दिस इज द मिडिल जॉइंट. जस्ट above the middle joint there is a CMP point of the triple warmer. So can you tell me what are all the disease which is connected with the endocrine organ? एंडोक्राइन ऑर्गन से संबंधित कौन कौन सी बीमारी है, बताइए. PCOD, डेफिनेटली लाइक hypothyroidism, PCOD, Diabetes. diabetes, hypo and hyperthyroidism. yeah, definitely Pituitary problem. the problem of the pituitary glands. And what else? Blood pressure, Adrenal gland. Adrenal glands problem. Yeah, BP, Cushing syndrome. sugar. Growth sugar problem. issue. Yeah. Growth issue. So I will tell you. Hypermenorrhea. Yeah, definitely hypermenorrhea because of the hormone problem. So patient will be coming to you कि अब मेरे पास एक लड़की आई ट्रीटमेंट के लिए, उसके पेरेंट्स ने बोला डॉक्टर साहब कुछ करिए, इसकी हाइट हर वीक में 1 इंच बढ़ रही है, हर वीक उसकी हाइट 1 इंच बढ़ रही है. अब आप समझिए, एज 13 years, you know why? Because tumor in the pituitary gland. She got tumor in the pituitary gland, and pituitary gland is the secreting growth hormone, and because of the growth hormone, she was getting height. The pituitary gland also secreting one hormone, one another hormone, that is prolactin hormone. उसकी उम्र 13 साल थी, अभी बच्ची थी वो, और उसके ब्रेस्ट में से मिल्क भी आ रहा था. तो जब whenever you are any patient is coming to you, you have to think what is the problem. Okay, she is having problem of the endocrine glands. The pituitary gland is not working properly. So when the pituitary gland is not working properly, or the thyroid is not working properly, or the person is having problem the pancreas, ovary, testes, any problem which is connected with any endocrine organ, then we have to work on the triple warmer meridian. Like many person is having thyroid nodule, goiter, so multiple type of the thyroid problem. And the problem of the adrenal gland की भी कई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जब कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में होता है, when the person is having lots of stress, so the adrenal gland is getting affected. And nowadays most of the people are having some little or the more the problem of the adrenal gland, because adrenal gland is connected with the stress. So that is we have to work on the ट्रिपल वार्मर मेरिडियन. हमें ट्रिपल वार्मर मेरिडियन पर काम करना होगा. डायबिटीज में तो करना ही होगा. अगर एक मेल को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, अगर आप मेल की सेक्सुअल प्रॉब्लम पर काम करना चाहते हैं, then you have to work on the endocrine meridian, because testes is making the testosterone hormone, and that is having connection with the endocrine gland. So in this way, there are lots of disease due to the hormones, and for any of the hormonal problems, you have to work on the triple warmer meridian. And from this middle joint, if we go up, that is the CMP point of the ट्रिपल वार्मर मेरिडियन. ये हमारे ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का CMP पॉइंट है. सो वी कैन पुट द निडल हियर, यहाँ पर हम निडल भी लगा सकते हैं. वी कैन पुट द स्टार मैग्नेट, मेथी सीड्स हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं.
even see here. Can you see this or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So in this way, this is a very good point. And Dr. Bowl points are exactly next to the bones. हड्डी से लगे हुए, हड्डी के बॉर्डर पर है. तो जब भी हम किसी भी पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, we touch the bone. So let's see in this image here. So there's a middle joint. And just above the middle joint, we are having this point. That is a triple Bormer 1B, the CMP point of the triple Bormer, and which will work on all the endocrine gland. जो सारी की सारी endocrine मैग्नेट लगाने से ना लोगों को बहुत चुभता है ना, जिसको लगाने वाले बहुत चुभ रहा है, कंप्लेन करते हैं. तो सर ये सीडेशन वगैरह नहीं कर सकते हम इसको? क्या लगाओ तो चुभता है? स्टार मैग्नेट सर. तो मेथी का दाना लगा दो, मेथी का दाना नहीं चुभेगा. हाँ ये बात सच है, स्टार मैग्नेट बहुत चुभता है लोगों को, है ना, कई बार. लेकिन दो लोगों को ज्यादा चुभता है. एक तो अगर किसी की स्किन ज्यादा सेंसिटिव होगी, इसको ज्यादा चुभता है, या फिर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तब भी ज्यादा चुभता है ना. कई लोगों की द मेनी पर्सन ऑल हैविंग सेंसिटिव स्किन, देन दे विल कंप्लेन. सो वी कैन गो विद and they are calling, Dr. Saab, it's paining a lot, what to do? Then we are telling remove it. So another option is this, we can go Sir, with, the needle also will pain a lot, no? Because it is on the bony area. so what we can do? Sir, the needle also will be very painful, no? Yeah, Because it is so on the needle is bony not area. pain. Actually, I will tell you when the needle is painful and when the needle is not painful. When the person is very relaxed, needle is not painful. But when the person is very stressful, the body muscles become stiff and needle will be painful. So many times what I do, when the patient is coming to us, you tell the person, okay, sit down comfortably, give 1 glass of the water, let the patient relax a little bit, talk for 5 to 10 minutes, okay. And after that, you put the needle, then needle will be less painful. If the person is very stressful, then definitely needle will be painful. This is, I have seen in my clinic, right? Okay. And also one thing, because if you know some technique, some release, like any type of the release, just do something 5 minutes to calm down the patient. If you do something to calm down the patient, then needle will be very less painful. Okay. And it also depends if you are skilled enough or not. Okay. Because many times when we are starting our practice, needle will be painful. But when we keep putting the needles, then after many years of the practice, needle is less painful. So it depends on many conditions, right? Yes, sir. Okay. So this was the CMP point of triple Borg meridian, or we can tell CMP point of the ovary, CMP point of the testes, CMP point of the male-female reproductive problem, CMP point of the endocrine organ, CMP point of the thyroid. So triple Bormer meridian is one of the great meridian. That's why this is my, like we see during the marriage ring ceremony. Generally, if you see, the ring used to wear in the ring finger, because this finger is having connection with the testes. This finger is having connection with the ovary. So for the male and female, this finger is improving the hormonal function. तो जब भी मेल और फीमेल के जो हार्मोनल फंक्शंस होते हैं ना, वो रिंग फिंगर के द्वारा इम्प्रूव होते हैं. तो इसमें गोल्ड की रिंग पहनाते हैं. गोल्ड रिंग क्या करती है कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अच्छा बनाती है. ओके, तो इसीलिए इसमें पहनाई जाती है गोल्ड की रिंग, राइट. फाइन. तो इस तरह से, लेकिन हम लोग ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग अपने पेशेंट को गोल्ड की रिंग पहनाएं. हम लोग तो पीले काले धागे पहनाकर या फिर निडल लगाकर या मैग्नेट लगाकर भी इसे ट्रीट कर सकते हैं. इट ऑल्सो गिव द सेम इफेक्ट. ओके, फाइन. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. Sir, एक only one use needle.
तो एक ही नीडल से काम बन जाएगा? अगर हम क्या पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा इसका लगाना पड़ेगा? अभी मैं क्या होगा, अभी मैं आपको CMP पॉइंट बता रहा हूँ, राइट? ओके मैं आपको RP पॉइंट बताऊंगा, रेफरेंस पॉइंट। जैसे मैं आपको रेफरेंस पॉइंट बताऊंगा, रेफरेंस पॉइंट क्या करता है कि जैसे एक मशीन आप खरीद के लाए, है ना, आप है ना एक मर्सिडीज कार खरीद के लाए, मर्सिडीज कार कितने की? 1.5 करोड़ की, और बढ़िया आपने घर में रख दी और चल नहीं रही है, चल नहीं रही, कोई काम की है? किसी ने कहा कि इसको घर में रखो, रे बड़ी महंगी कार है घर में रखो, कोई काम की है? कोई काम की नहीं है। उसने बोला सो यू लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, समवन इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, एकदम गुड बॉडी, गुड मसल्स, but he cannot walk for 100 steps. Then what is the meaning of good body, beautiful body? Okay. So when we talk about the functional problem, we have to add RP point, reference point. Okay, so we will discuss each and every point one by one. At the last, we will combine. Then it will become a beautiful protocol, right? तो हमारा प्रोटोकॉल, तो पहले एक बार हम CMP पॉइंट तो समझ जाएं कि CMP पॉइंट करता क्या है, तो हम जी यस सर। इसके बाद हम एक एक करके फिर हम प्रोटोकॉल की बात करें। ओके सर। Anyone is having any question? Because we have only 7 minutes left. Any questions? Sir, shall we put the CMP points in both hands, sir, or only Yeah, one? so we have to put in the both hands. Yeah. Thank you, sir. Okay. Fine. Any questions? No. Sir, when we put yellow and brown thread for the spleen CMP point and liver CMP point, no problem. No problem. Because if we are putting the yellow thread, so yellow strengthen the spleen, because it's the same color of the spleen. Spleen is because the color of the spleen is yellow. Yellow, yeah. And it will control the liver. It will calm down the liver, because liver, it is the opposite to the liver. Yellow. Sir, if the CMP point is paining visibly, I mean, any time you press and you see that it is paining, that means it needs sedation? No. It's not being sedation. Actually, if there is a problem, then even suppose some organ is having weakness, then also the point will be painful. That time we have to point. If the problem is in the excessive condition, then also it will be painful. तो प्रॉब्लम तो दोनों कंडीशन में हो सकती है, जैसे कोई ऑर्गन कमजोर है तब भी हो सकती है, और कोई प्रॉब्लम एक्सेसिव है तब भी कमजोर हो सकती है। उदाहरण के लिए किसी का लंग्स कमजोर है और उसे बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, तो भी लंग के पॉइंट में दर्द होगा। और किसी का लंग एक्सेसिव है, उसे अभी कोई वायरल या बैक्टीरियल अटैक हो गया उसके लंग्स पर और खांस रहा है, तो भी उसके CMP पॉइंट पर दर्द हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली we have to find out the conditions. So CMP point is painful whether it is the deficient conditions or it is excessive condition. So CMP point is not telling you that whether the deficient or the excessive condition. CMP point is telling you whatever the condition, you just stimulate CMP point and it will balance it, it will restore it. Got it? Sir, we should use it both hands, or so for one male, definitely I will tell you once again. for male left hand and ladies right hand. No, in the Dr. voll this concept is not there, because if you want to work on the pancreas meridian, you have to go in the right leg, whether the male and female, and if you want to work on the spleen meridian, you have to go in the left. No, for other meridians. For any meridian. This concept is not in the Dr. voll. Dr. voll was pure allopathic doctor, and he was just working like, allopathic mind is. So we should work on both the hands or both the feet. Both hands, right? Yeah. Hello. Yeah. Can I speak? Yes. Hi, good evening, everyone. I'm just wondering about the duration of the treatment. Okay. So if you are using the metal seed or anything else, so every single day you can do the treatment, and for how long? Okay, so actually the question is this: when we are putting the seeds, we can put the seeds for 2 to 4 hours. When we are putting the magnets, we can put for 2 to 4 hours. But when we put the needles, 30
30 minutes is maximum. No need to go more than Yeah, 30. a lot of people are shying away from the needles. I think we should stick myself because I've seen so many objections. So I will go for the metal seed or even the ear. What you call them? Forgot the name. You know the seed that goes in the ear. Will it work? Yeah, definitely. It's good for you. It's good for you. You can go with the seeds because So every single day is okay. yeah, seeds are very good for you. You can go with the seeds. Yeah, every day for how long? Seeds like you have to only 2 to 4 hours enough. 2 to 4 hours enough. Yeah, for a diabetic person, You're diabetes asking for too. diabetic How patient? to expect the result? Yeah, so diabetic patient, I will tell you, for the diabetic patient, you can apply seeds for, again, I will tell you 2 to 4 hours, but don't apply seeds throughout the night. Because Right. why? Apply the seeds during the daytime. Daytime, why? Oh yeah, I know what you mean. It's like color therapy. Yeah, that's fine. Yeah, Yeah. just how long it takes because they are eager to know to heal. So it takes what 2 weeks every day, 3 days every day, 3 weeks. I don't know how because they ask these questions. They don't know about all So this. if you are putting the seeds, very good, you can go thrice in a week. Okay, there may be some kind of relief at least, not a cure, Thrice in a week. at least some relief. Yeah. So Okay, you can okay. go, agar hum, Yeah, this is a major problem here. Yeah, no, I'm suppose, yeah, I can am in understand. Algeria. I can understand. I'm in Algeria at the moment, where I come from. So I'm just seeing everyone is having this issue with fat deposit and so this is the main issues I can guess here. Okay. So suppose if we Thank can, you, sir. yeah, if we can do the treatment thrice a week, it's good. But sometimes it's not possible. We can do the treatment once a week. Once a week also. Once a week. Yeah, once a week also we can do the treatment. But if we do the thrice a week, it's a better options. So can we Okay. stimulate the needle and Thank take you it very out much. immediately? Yeah. We can stimulate the point with the you are asking stimulate the point with the seeds? Yes. No, No need. stimulate with needle. Stimulate with needle and we can take it out immediately. Stimulate and take it out. Actually, this It's like needle. master tongue. It's like master tongue. You can just pinpoint and take it off. You don't need to leave the needle inside. Just one prick and take it off. You will do the job. Yeah, actually, this is the Japanese technique. In the Japanese technique, what they do, they put the needle and remove it. They put the needle and they remove it. But in the Dr. Bowl, this technique, they have never used. Even I have never used this technique. So put and remove. You can try. And if you get the results, you can also share with us. Okay? Okay. Yeah, Thank you. Yeah. Thank you so much, everyone. Okay. सर लीवर सीएमपी पॉइंट के बारे में सर जो थ्रेड आपने मेथड बताया सर वो प्लीज एक बार करके बता दीजिएगा सर मैं क्या बता दूं करके लिवर सीएमपी पॉइंट को कैसे लगाते हैं जी सर थ्रेड थ्रेड नहीं जी थ्रेड के लिए किस तरह से करा जाता है सर एक बार लाना पड़ेगा थ्रेड में कुछ नहीं है एक धागा अच्छा। लेना और बांध देना है बस बांध देना है बस कुछ नहीं करना है सर हाइपर एक्टिविटी के लिए हमें करना है बच्चे की हाँ हाइपर एक्टिविटी के लिए करिए आप एक ब्राउन कलर का धागा ले लीजिए ऊन होता है ना ऊन का धागा जिसे स्वेटर बनाते हैं जी यस सर तो एक ब्राउन कलर का धागा लीजिए और अंगूठे पे बांध दीजिए बस और कुछ नहीं करना है कहाँ पर वहीं उसी जॉइंट के ऊपर ओनली ब्राउन How long to keep? हाँ ब्राउन that कलर thread? ब्राउन कलर बांध दीजिए उसको बना रहने How दीजिए long to keep? तो आपने ग्रीन और येलो भी बताया था इट इज फॉर लॉन्गर टाइम देयर इज नो इशू और सब ग्रीन और येलो भी हाँ मतलब येलो भी ले सकते हैं आप और ब्राउन भी ले सकते हैं दोनों में से कोई भी ले सकते हैं है ना ओके ओके सो थैंक यू सो मच सर आप बोल रहे थे नाइट पे सीड्स मत लगाना क्यों नहीं वो मैं डायबिटीज के लिए बोल रहा था कि डायबिटीज में क्या होता है ना कि अगर मान लो डाउन आता कभी हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो वो रिस्क है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डोंट पुट द मैग्नेट सीड्स
throughout the night for the Yes. dilatation. Okay. Yes. Yes. सर हाँ, लंग्स फाइब्रोसिस में सीएमपी लंग्स पॉइंट लगा सकते हैं? लंग फाइब्रोसिस में सीएमपी लंग पॉइंट लगाना ही पड़ेगा 100%. यस, डेफिनेटली लगाना. यस, सर कितनी देर तक मानेंगे? सीएमपी पॉइंट को, धागे की बात कर रहे हो आप? यस सर, कितनी देर तक धागे को बंद बंधा रखना रहने है? दो, धागे को बंधा रहने दो कई दिनों तक, कोई इशू नहीं. यस, धागे में कोई प्रॉब्लम. ओके सर, सेशन इज कंप्लीट. सेशन कंप्लीट. सो थैंक यू सर सर. धागा हम अब कल मिलेंगे. या सर सर एनी आपने जो धागे को बांधने में अगर किसी का जो है जैसे स्टमक का जो इशू होता है जिसमें कहते हैं कि स्टमक वो हिल जाता है, नाफ हिल जाती है, क्या बोलते हैं उसे, तो उसमें क्या भी कलर बांधा जा सकता है? धागा का ब्लैक कलर का बांधा तो में बांधते थे हमारे पुराने जमाने में लोग, तो क्या वो भी किसी से? हाँ, ब्लैक कलर का धागा इसलिए बांधते हैं, और वो ब्लैक कलर का धागा उसके रूट में बांधते हैं, रूट में. हाँ हाँ रूट, अभी हम सीएमपी पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ऊपर की बात कर रहे हैं. हम रूट के पॉइंट्स की बात करेंगे तब हम उसकी बात कर लेंगे, है ना? क्योंकि अंगूठे के रूट में बांधते हैं ना, कि ऊपर बांधते हैं धागा. यस सर सर नीचे बांधते हैं, रूट पे रूट की हम बात कर लेंगे, है ना, कर लेंगे बात. इसको स्टॉप भाई. क्योंकि रूट क्या होता है, आई विल टेल यू. रूट किडनी होता है. देखो, किसी भी चीज का जो रूट होता है ना, वो किडनी होता है. नाभि को सेट करने के लिए हमें किडनी को स्ट्रेंथन करना पड़ता है, तो हम इसकी बात हम कर लें, है ना? तब तक आप मेरिडियन पढ़ लीजिएगा. किडनी मेरिडियन आप देख लीजिएगा. किडनी मेरिडियन इज गोइंग फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द नेवल. It's enclosing the navel very tightly, kidney meridian. If the kidney meridian is loose, then it's very difficult to keep the navel at its own place. तो उस पर रखना बड़ा कठिन है, राइट? तो जब तक आप पढ़ लीजिएगा किडनी मेरिडियन, देन आई विल डिस्कस. या सर जो लंग फाइब्रोसिस के लिए ये CMP देते हैं ना 10 पॉइंट. हाइपर एसिडिटी. No, we are not discussing protocol right now. We are discussing the points. Protocol will come later on, right? Okay. Yeah. पॉइंट की जो लोकेशन है वो यूनियन लाइन पर है क्या? Excuse me, sir. Any patient is coming with this hormonal disorder. If we keep 1 point, triple warmer is enough. Any supporting points is needed. No, actually 1 point is very good, but we need more points. But in the doctor bowl, there is also single point therapy also is there. When we put 1 point to bring the very good effect. But in many diseases, we have to combine, at least put 3-4 points. So that we'll discuss in the protocol. Okay. But for making the protocol, we have to understand first what are the CMP points. सर डॉक्टर वॉल की बुक जो कि हम परचेज कर सके मार्केट से, डॉक्टर वॉल की कोई बुक जो आप रेकमेंड करें? डॉक्टर वॉल की जो बुक है ना, वो जो खेमका सर के द्वारा लिखी गई जो बुक है ना, जी सर, वो बुक वो आप ले सकते हो. दैट इज गुड बुक. सर जो आप रात को क्लॉक टाइम बता दें सोने के लिए, क्या कौन सी उसमें क्लॉक में सोते हैं सर? तो कुछ इसके बारे में बताएंगे सर? क्या फिर से रिपीट करिए क्या बोल? ऑर्गन क्लॉक के बारे में बता दें कि रात को हमें किस टाइम सोना चाहिए. आप कल बता रहे थे सर, तो क्या टाइम सही रहता है? या सो रिगार्डिंग द ऑर्गन क्लॉक आई विल डिस्कस. सर इसका Hi, sir. रिकॉर्डिंग Can I मिलेगा? ask one more question, please? इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा सर? Yes. Sir, nasal bleeding issue, can we put the spleen for CMP point? Actually, for the nasal bleeding, we have to first discuss what is the cause of the nasal bleeding. Okay, हमें पहले nasal bleeding का cause ढूंढना पड़ेगा. And Hello, sir. Can I ask one more question, please? nasal bleeding is because of the hyperactive liver. Okay. Sir, no, mouth blisters. So actually, I will tell you, in this way, we will not able to understand anything, because if you ask me protocol, I will tell you the points. My target that you learn thorough and time. And very properly, systematically, right?
एक मैं आपको बता दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं Sir, मत can you repeat the name of the Dr. Wall book? खेमका सर के द्वारा लिखी गई बुक है। दैट इज गुड बुक फॉर डॉक्टर। सर कल बताएंगे उसके बारे Can में। we क्लास put कल डिस्कस this करेंगे। type of clip हाँ बता दूं near the CAP बता दूं points? बता दूं क्या? Can we put this type of clip near the CAP points? तो दोनों एक साथ हो जाए ऐसे। एक मिनट देखने Can दीजिए। I ask one more question, please? Yeah, Last one. Can we use okay. Doctor? But you see the Can you use my Kavita, so look at here. So this is also a good way to activate the CMP point. Yeah. Okay, very सर ये good. मशीन होती है TCM पॉइंट से बताती है सर? क्या? ये मशीन जो होती है सर, ये सर TCM पॉइंट से बताती है? ये मशीन नहीं है। नहीं, जो मशीन उन्होंने सर ने बताई थी अभी, अली सर ने बताई थी जो। हाँ हाँ, तो वो मशीन क्या थी? वो मशीन जो है वो पॉइंट स्टिमुलेटर है। इससे हम पॉइंट को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। वी कैन डिटेक्ट द पॉइंट, इवन वी कैन ट्रीट द पॉइंट बोथ। सर वो TCM पॉइंट से बताएगी? TCM पॉइंट्स भी? Yes, that is Ayurvedic not only for Dr. Bull point, but it is also for Ayurvedic treatment, sir. yeah, definitely we can do the treatment for any disease while using Okay, that. thank you, sir. अच्छा लेगा। So what I will do, 1 minute. So now, because many people is speaking together, so many things I'm not able to understand. One last question, if anyone yes. Raise the hands. Kamalji, I'm not able to understand. Unmute yourself. Yeah, unmute. Okay, can you hear me? Yeah. Okay. Can I add master tongue acupuncture? Can we add with the Dr. Wall? Is it possible? You can add all together. The number of points should not be too many, but you can add, definitely add. Can we as well? I have got young children here. They have I said you can see the picture. Yeah. I think they brought them here. They want to see how we can help them with Dr. Wall and Master Tongue. Do you think we can help them? Yeah, we can add. Definitely we can add. Is it possible? Yeah, definitely we can add. All together, the number of points should not be more than 10, 12. That is 10, 12 points is enough. You can add Master Tongue point, you can add Dr. Bull point, you can add TCM point. But all together, the number of points should not be too much. You can see all these beautiful children, they really, I like to help when I can, if they are happy with that. Okay. All right. Thank you very much. Thank you. That's all I want to know. Thank you so much. Welcome. So the recording will be available very soon. Now we'll see you tomorrow. Good night, sweet dream. Kal milte hain. Okay, closing the session now.